And what does it consist of? As you can see, अगर इस तरफ देखेंगे तो it consists of pair of ovaries. As you can see, the human female reproductive system, it consists of the pair of ovaries. जैसे मैंने आपको बताया था, and you will find it also has the pair of oviduct. What it has? The pair of oviduct. It has a uterus, then you have the cervix, and then you have the vagina. Clear? These are the important parts, as you can see. Apart from this, the external genital part, जो इस diagram में नहीं है, that external genital part of the female reproductive system is commonly termed as vulva. Clear? And that is the external genitia or the external genital part which has been observed over the female reproductive system. इसके अलावा you will find that the external genital part of the female reproductive system, it is mostly it is visible in the pelvic region. But apart from this genital parts, apart from this reproductive system, the mammary glands, they are also an eminent part of the female reproductive system. What I am saying is the mammary glands, they are also an important part of the human female reproductive systems. Clear? Because mammary glands, they support the process of ovulation. Mammary glands, they support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, सारी चीजों में वो हेल्प करता है. अब सबसे पहले हम ओवरीज से शुरू करते हैं. Clear? You know, every female after the onset of menstrual cycle, एक फीमेल का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उस समय से लेकर के अल्टरनेटिवली एक एग जो है वो अल्टरनेटिवली एक जो फीमेल है वो अपने लाइफ टाइम में रिलीज करती है, एंड दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज मेनार्के, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और जब वही मेंस्ट्रुअल साइकिल अबैंडन हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, दैट इज नोन एज मेनोपॉज. और तब तक अल्टरनेटिवली एक ओवरी से एक ओवम जो है वो रिलीज होता रहता है. जैसा मैंने बताया था, ओवरीज फीमेल गैमेट ओवम बनाती है, और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन, द स्टेरॉइड हार्मोन, दे आर आल्सो नोन एज ओवेरियन हार्मोन. द स्टेरॉइड हार्मोन, ovarian hormone, they are commonly known as the ovarian hormone. All the steroid hormone, they are commonly known as the ovarian hormone. And जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरी का लोकेशन, this lies in the pelvic region, but this lies in the abdominal region. The ovaries, they basically, if you can see in the diagram, it lies in the abdominal region. The length of the ovary is 2 to 4 centimeter. The length of the ovary is what you rightly call as 2 to 4 centimeter. The ovary is connected to the pelvic wall of the uterus. The ovary is connected to the pelvic wall of the uterus. Clear? और uterus से ovary कैसे connected रहती है? It is connected with the help of ligaments. It is connected with the help of what you rightly call as ligaments. हर ओवरी के ऊपर में एक थिन एपिथेलियम जो है, इसकी एक लेयर, देयर इज अ थिन एपिथेलियम लेयर, देयर इज अ थिन एपिथेलियम लेयर that encloses the stroma. So this epithelium layer is enclosed inside every ovary, जैसा मैंने आपको बताया था. इसके बाद स्ट्रोमा जो है, इसमें that stroma is divided into 2 zones. This stroma is divided into 2 zones. One is the peripheral cortex and the second one is inner medulla. क्या? You will find that one is the peripheral cortex and the second one is inner medulla. Inside the ovary, the stroma, they are covered. They have these 2 distinct features. जैसे मैंने आपको बताया. अब इसी में हम लोग we will now move on to these sides, that is what you rightly call as the oviducts. जैसा आप लोग इस तरफ देख रहे हैं, we will talk about the oviducts, also known as
fallopian tubes. The oviducts, they are also known as the fallopian tubes. अगर आप इसमें देखेंगे तो you will find oviduct, uterus and vagina. I repeat, the oviduct, the uterus and the vagina. These are the accessory ducts or accessory parts of the female reproductive system. These are what? These are the accessory ducts or the accessory parts of the female reproductive system. This fallopian tube is around 10 to 12 centimeter. The oviduct or the fallopian tube, the length is around 10 to 12 centimeter. और वो ओवरी से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे रास्ते ये उसका डायमेंशन है. That is 10 to 12 centimeter. That part of the oviduct, that part which is closer to the ovary, that is known as infundibulum. I repeat, that part of the oviduct which is closer to the ovary is commonly called as infundibulum, as you can locate it out. उसके बाद जो infundibulum है, इसमें आप देखेंगे ये finger like projections हैं, surface area को भी बढ़ाता है. These finger like projections, they are commonly known as fimbriae. What they are commonly known as fimbriae. These finger like projections, they are fimbriae. ठीक है. फिम्ब्रे का एक सबसे एमिनेंट काम है सेल सरफेस एरिया बढ़ाना है, पर ये ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम को कैप्चर करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू कैप्चर ओवम एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. It helps to capture ovum at the time of, as I told you, ovulation. Infundibulum थोड़ा सा आगे जाकर के चौड़ा हो जाता है, और जहाँ पे infundibulum ऊपर जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे नैरो हो जाएगा, that narrow part of the upper side of the infundibulum is known as ampulla. That upper part of the infundibulum is commonly called as ampulla. ठीक है. And the last part is, as you can see, it is the isthmus. Isthmus is that particular point where it joins the uterus. और थोड़ा सा इसमें और आगे जाएंगे इसके बाद. You can see all these three parts, isthmus, ampulla and infundibulum, they are commonly called as fallopian tube या oviduct. I repeat, all these three parts कौन कौन से? Isthmus, ampulla and infundibulum, they are commonly called as fallopian tube, जैसा मैंने आपको बताया था. क्लियर, राइट है ना. अब यूट्रस के बारे में बात करेंगे. इसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, माँ की कोख बोलते हैं, वॉम बोलते हैं. ये वही जगह होती है जहाँ हम सब 9 महीने अपनी माँ की पेट में रहते हैं और उसके बाद हम जन्म लेते हैं. यूट्रस इज कॉमनली नोन एज द वॉम. और अगर आप यूट्रस के बारे में देखेंगे, एक ही यूट्रस सिंगल होता है. और यूट्रस का शेप अगर आप देखेंगे, पियर जानते हैं ना आप लोग, नाशपति जिसको बोलते हैं. तो अनाशपति को जब आप अनाशपति क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, जब आप उसको उल्टा कर देंगे तो इट इज लाइक द इन्वर्टेड पियर शेप. द शेप इज समवॉट लाइक दिस, द इन्वर्टेड पियर. सो द शेप ऑफ द यूट्रस इज समवॉट लाइक इन्वर्टेड पियर, जैसे मैंने आपको बताया था. क्लियर. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यूट्रस के जितने भी, यूट्रस का जो वॉल है, इट इज अटैच्ड विद लिगामेंट्स. क्लियर. वो आपके लिगामेंट से अटैच्ड रहता है टुवर्ड्स द पेल्विक रीजन. ये अटैचमेंट उसमें रहता है. एंड देन आफ्टर यूट्रस ओपन्स इनटू, जहां पे यूट्रस ओपन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू कॉल एज अ नैरो पैसेज व्हिच इज नोन एज सर्विक्स. ठीक है. एंड दैट पैसेज इज नोन एज वजाइना. व्हाट इट इज कॉमनली कॉल्ड एज? इट इज कॉमनली कॉल्ड एज वजाइना, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया. We all know that the walls of the uterus has 3 layers. The walls of the uterus has 3 layers: endometrium, myometrium, and perimetrium. The walls of the uterus has 3 layers: endometrium, myometrium, and perimetrium. External thin membranous layer is commonly called as perimetrium. This is the external layer. The perimetrium is the outermost external layer, जैसा मैंने आपको बताया था. The middle layer is made up of smooth muscles, myometrium. This is the middle layer, and it is made up of
smooth muscles, commonly known as the myometrium, and the innermost layer, as you can see, you will find it is endometrium. It is made up of the glandular layer. So this one is the endometrium, जैसे मैंने आपको बताया. तो ये तीनों लेयर्स हैं. ये तीनों लेयर्स मिल करके यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग करते हैं. कौन कौन सा? That is perimetrium, myometrium and endometrium. ये तीनों layers, all these three layers, they make the lining of the uterine cavity. इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और एक चीज देखेंगे, तो इनमें से जब periods होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, you will find कि endometrium में, as you can see, this endometrium or the inner glandular layer, it undergoes cyclic changes. इसमें अलग अलग समय अलग अलग तरह के साइक्लिक चेंजेस होते हैं. ये कब होता है? द एंडोमेट्रियम इट अंडरगोस साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. It is during the time of what you rightly call as menstrual cycle. So when you have the menstrual cycle, at the time of the menstrual cycle, you will find that it undergoes a lot of changes during the time of the menstrual cycle. क्लियर है ना? मायोमेट्रियम, ये जो आप मिडिल लेयर देख रहे हैं मायोमेट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्शन शो करता है. जब बेबी की डिलीवरी होती है तब इसी मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो द मेन फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिडिल बोन एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज द मायोमेट्रियम. अब इसके बाद दिस इज all about the female reproductive system. इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे. अब कुछ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं.